Good morning, students. So, last class we are continuing with the chapter biological classification. Okay. So, biological classification means what? Classification of the different living organisms present on Earth surface. So, our Earth surface ଯେତିକି living organisms ଅଛନ୍ତି nearly about 17 to 18 lakhs different species of the living organisms. So, ଆମେ ତାକୁ classification କରୁଥିଲୁ. The chapter is dealing all about the classification of living organisms. So, there are so many scientists are there and in different way they have classified. Okay, two kingdom system of classification, then a three kingdom, then fourth kingdom, then five kingdom. So we are continuing with the five kingdom system of classification, and this was proposed by R.H. Whittaker in 1869. And according to Whittaker, all the living organisms are divided into five kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, Plantae, Fungi, and Animalia. So we have completed Monera. Monera kingdom is all about the kingdom of prokaryotes, and the members are only and only bacteria. Then the next kingdom we have started, the kingdom Protista. Protista kingdom containing all the unicellular eukaryotic organisms. Okay, all the eukaryotes that are unicellular present in the kingdom Protista. And I told you the kingdom Protista, it has no well defined boundary. आर किसी भी गोटे पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं कि ए टाइप ऑर्गेनिजम्स हेले प्रोटिस्टा भितर रहिबे. It may contains plants, it may contains animals, it may contains fungus. तो सेथि भाई प्रोटिस्टा किंगडम को गार्बेज कैन भी कहा जाए, डस्टबिन भी कहा जाए. And we have classified Protista, chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoa. These parts are completed. Then we have started about the third kingdom, which is kingdom fungi. So fungus kingdom containing a eukaryotic organisms that are unicellular, as well as the fungus may be multicellular. Okay, but fungal special feature है they are heterotrophic organisms. They cannot make their own food, and they have a chitinous cell wall. Clear? Now the fungal body is called as mycelium. Mycelium टा कौन? It is a hyphal network. So filamentous body of the fungus is called as hyphae. So network of hyphae is called as mycelium. Clear? Now we have classified the mycelium into sinusoidal mycelium, then uninucleate mycelium, septate mycelium, aseptate mycelium, all these things. And the reproduction is by asexual method, sexual method, vegetative method. So vegetative method रे कौन थिला? Fission, fragmentation, budding. Asexual method is the production of spore. Sexual method involves three steps: plasmogamy, karyogamy, as well as meiosis. Okay. So in today's class we will be dealing about the classification of kingdom fungi. So fungus को हमें जिते बड़े classify करूँ चुनते किम्ते का classification करीबा को basis रे classify करीबा and which criteria. Okay. So classification of fungi. Classification of fungi. फंगस को हमें क्लासिफाई करिबा केमती? So with respect to nature of mycelium, तार mycelium केमती अछि? May be septate, may be aseptate. Septate mycelium or it is a septate mycelium, ताको हमें टिके ध्यान दवा. Mode of spore production, spore production टा केमती का होची ताको हमें टिके ध्यान दवा. Okay, spore production endogenous means inside the body, or it is exogenous outside the body.
स्पोर्स माने जानी सारछे हमें रेणु तो स्पोर्स गुड़ाक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प करती स्पोर्स गुड़ाक से माइसेलियम रु डिस्पर्स हुए कोटी गोटे सतोषंतिया जगह पड़ो से जर्मिनेट होकर नुआ माइसेलियम तैयारी करे सो मोड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन एंड द मोड ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज मोड ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज फ्लोटिंग बॉडीज इन द सेंस semanଙ୍କର तो fruit नहीं very simple we all know that fungus do not have fruits because they are not plants but floating body जेटी को सेंस रे हम काहा को यूज करूछु कि जो स्पोर जहां भीतर प्रोडक्शन हबो this is called as floating bodies and because it produces spores the spore producing structures are called as floating bodies are the spore producing structure बात को तुम कही परिबो स्पोरांजियम कही परिबो स्पोरांजियम माने कौन आंजियम जो वर्ड अछि in Greek language the angium means sac or a bag or a vessel स्पोर प्लस एंजियम इक्वल टू स्पोरांजियम तो जो वेसल्स भितर जो सैक भितर स्पोर टा प्रोडक्शन हबो से कैविटीज टा को हमें कोन कहू स्पोरांजियम बा ताको लिटरल लैंग्वेज रे जनरली हमें ताको फ्लोटिंग बॉडी बोली कहू ओके फ्लोटिंग बॉडीज आर नथिंग बट स्पोरांजियम इनसाइड व्हिच द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड स्पोर को फ्रूट भलिया कंसीडर कराई छेटी स्पोरांजियम टा को फ्लोटिंग बॉडी भलिया कंसीडर कराई छ इट इज क्लियर सो विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ माइसेलियम कैसा है उसका माइसेलियम देखना पड़ेगा आपको हाउ द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज अबाउट द फ्लोटिंग बॉडीज ऑफ द स्पोरांजियम ये तीनटा जिनिस को आधार करके बेस करके हमें कोन करबा fungal kingdom taku kingdom fungi taku now will classify into four major groups okay see how we can classify fungi so fungi is classified into four groups, four classes. The first class of the fungus, which is called as Phycomycetes. Then the second group of the fungus, Ascomycetes. Third group Basidiomycetes and the last one Deuteromycetes. These are the four groups. The fungal kingdom fungi is classified into four divisions, four groups. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes as well as Deuteromycetes. But in every group, the suffix you will get mycetes is common. You see, this is mycetes, here it is mycetes, here it is mycetes, here it is mycetes. ता माने कौन? Mycetes माने related to fungus. The study of the fungus is called as mycology. I told you. The study of fungus is called as what? Mycology. Mycology. So mycos means fungus. Mycetes means derivatives of the fungus, classification of the fungus, division of the fungus. Okay. So mycos, mycota. Mycos is called as what fungus. Here it is called as Phycomycetes, here it is called as Ascomycetes, here it is called as Basidiomycetes, it is called as what? Deuteromycetes.
ठीक है जी. Now we'll go on details each and every classes of the fungal classification system. Okay. Now come to Phycomycetes. अच्छा को हमें केमती मने रखिबा या पई गोटे ट्रिक अछि गोटे mnemonic अछि how to remember these four classes of the fungus. The mnemonic, the trick is एटी गोटे ट्रिक ता हम यूज करिबा. What is that trick? Phycomycetes. First, ask your basic duty. मन कर तुम गोटे जॉब टे कल गोटे ऑफिस रे तुम काम कौन रही फास्ट जाकि तुम पचार दब सर व्हाट इज माय बेसिक ड्यूटी. First ask about your basic duty. So first stands for Phycomycetes. देखो ये F होची तो मैं P संग मैच करिबनी just to match this. First for Phycomycetes. First for Phycomycetes. A for Ascomycetes. B for Basidiomycetes. D for Deuteromycetes. Four groups are ready. Okay. This is the trick. You can remember what are the types of fungus. Then you recall. First ask your basic duty. First ask basic duty. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. Four divisions are there. Then come to the first group. That is your Phycomycetes. First one, let me change the color for you. Phycomycetes classes. The first group of the fungus is my Phycomycetes group. Mycetes means fungus. Phycos. Phycology related to algae. एलजी रे जते बेले हम क्लासिफिकेशन करबा प्लांट किंगडम रे नेक्स्ट चैप्टर अछि देखिबो क्लोरोफाइसी सियानोफाइसी. ओके फाइओफाइसी मींस एलजी शैवाल केमती सब थाए. अच्छा तो जदि एटा माइसेटिस हेले फंगस फाइकस हेला कोन एलजी. तो हम गोटे डिस्कशन करितिलु कि फंगस रो जते बेले हम कहउथलु तार न्यूट्रिशन गोटे थिला तमर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Symbiosis means helping each other. Here two different organisms belong to two different species are united together. दीटा अलग अलग ऑर्गेनिज्म दीटा डिफरेंट स्पेसीज रहिथिबे समाने परस्पर सहित एसोसिएट हेथिबे ताको हम कहू सिम्बायोसिस बा म्यूचुअलिज्म बा ताको तमे सहजीवी गोटे पढ़िथिबो. सहजीवी माने कोन परस्पर समाने दे विल लिव टुगेदर दे विल डाई टुगेदर. बुझ पालछो कि नहीं. सहजीवी रे कोन जेमति एस्चेरिचिया कोलाई एंड ह्यूमन बीइंग ई कोलाइटा गोटे बैक्टीरिया गोटे प्रोकारियोट्स बट ह्यूमन बीइंग वी आर यूकारियोट्स. तो प्रोकारियोट यूकारियोट रे एसोसिएशन ही पार बैक्टीरिया विथ ह्यूमन बीइंग. तो सी जो एस्चेरिचिया कोलाइटा हमर इंटेस्टाइन भितर अछि तार रोल कोन गोटे सहजीवी ही अछि. आमर से कोनसी प्रकार खेती करू जे नहीं बरं एस्चेरिचिया कोलाई हमको किछि हेल्प करू जे आमे ताको किछि हेल्प करू जो वी आर हेल्पिंग ईच अदर. ह्यूमन बीइंग कोन दउची इकोलाई को न्यूट्रिशन दउची रहिया पय जगह दउची रिप्रोडक्शन कराउची ता भितर रेयर इकोलाई हमको कोन दउची विटामिन B1 विटामिन B2 विटामिन B12 एंड विटामिन K. तो ये जो टाइप रो रिलेशन ये जो टाइप रो एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस. बट एट जदि हम देखिबा फाइकोमाइसेटिस algae and fungus एसोसिएशन दैट इज कॉल्ड एज लाइकेन. लाइकेन रो algae थिबो गोटे फंगस थिबो तांका भितर गोटे एसोसिएशन हेता. This is called as lichen. Lichen upre हम details पढ़िबा चैप्टर लास्ट अछि about lichen. We will focus on that. But here is Phycomycetes classes. These fungus are commonly called as algal fungi because they are associated with algae. These are commonly called as algal fungi.
These are commonly called as algal fungi. Algal fungi mane they are associated with algae, hence their name is algal fungi. Okay, so these are most of them, not all. These are associated with algae mostly. So many of these fungus, Phycomycetes from many fungus, most of the fungus are associated with algae, and some of them are aquatic, some of them are terrestrial, some of them are parasitic. देखिए बात, these are aquatic, the members are aquatic, terrestrial, parasitic, and they grow on decaying woods. 50 टा गाठा उपरे ग्रो करथिबे. They grow on decaying woods. सड़ी जाउथबा काठा उपरे से माने ग्रो करी. Decaying woods. Concept टा बुझि पारले कि नहीं? These are the Phycomycetes classes रे मनंकर symptoms, मनंकर general characters. बुझि आबो? Okay. Next part. Next part देखिबा. How these classes reproduce, what is about their reproduction. And the reproduction, so let me tell about asexual method. Asexual method रे केमती का reproduction हुए हमें समझते जानी चु. That is called as your spore production. रेणु तैयारी है वो spore production होगा. Spores are haploid. Spores are what? Haploid spore. Haploid माने कौन N? Haploid spore. Haploid माने कौन? Half of the chromosomes. The chromosome जति की रहबा कथा गुड ऑर्गेनिज्म तार जो आधा ही जाए, one set ही जाए, that is haploid. For example, human being कथा नबा हम बॉडी रे 44 टी क्रोमोसोम अछि, बा 23 pairs को आ जाए. So चटला 2a diploid equal to 46. दुईटा सेट अछि हमर. दुईटा सेट कोड आसला गोटे सेट from my father 23 chromosomes. One set is from my mother 23 chromosomes. So father रो गोटे सेट, mother रो गोटे सेट आसी कि 2 सेट हे गला पखरे दुईटा सेट 46. जते बेले गैमेट प्रोडक्शन होउची, मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, जुग्मक तयारी होउची, स्पर्म एंड ओवम. So they containing only one set of the chromosomes. And one set n equal to 23. 2n equal to 46, n equal to 23. Half of the original set. Yes. Now fine. So asexual method is the production of spore. Spore जो production है ला haploid spore. सी spore टा ना कौन? These spores are, these haploid spores may be zoospore or it may be aplanospore. Zoospore or aplanospore. Zoospore is motile spore. Zoospore is motile. Aplanospore is my non-motile spore. ध्यान दबो टिके पिला माने. Zoospore है ला motile. ता माने से spore रे flagella थी, flagellated. Motile जदि मु कहूची, you keep it in your mind. These are flagellated. Non-motile टा कौन? Non-flagellated. Is it clear?
flagellated spore, non-flagellated spore. Flagella ରହିଲେ motile, flagella ନାହିଁ non-motile. But my question is जो दिटा जाको spore ରହିଲେ एटा कोडी production हबो तार floating body टा mycelium भितरे के थिबो endogenous origin. So आमे जो classification criteria लिखिथिलु mode of spore production inside the body or outside the body, endogenous or exogenous. So ये दुईटा जाको spore कोडी production हेबे रे. Both spores are produced inside sporangium. Spores are produced inside sporangium. यदि sporangium भितरे spore टा production होउचंती ताले ताको हम कोन कहबा endogenous कहबा. Endogenous origin. Be careful. Endogenous means internal origin inside the sporangium. Exogenous means outside the sporangium, bahare production of. Is it clear? Spores are clear. Then next point is through the sexual reproduction. Sexual reproduction में किमती का कौन होची देखिए वहाँ second method ऐसी गला part 2 sexual reproduction. आ भीतरे कौन concept आवे देखो. In this method gametes are produced, male and female gametes are fused. So male जुग्मक जोड़ा हबो female gamete बा जुग्मक तयारी हबो समान दी जण परस्पर सहित आसिक मिसी जिवे फ्यूजन हे जिवे. फ्यूजन हे सरला परे कोन तयारी जिवो जायगोट. तमे सिखिथिलु 3 steps प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी एज वेल एज मेयोसिस. सो आगे फर्स्ट कोन हबो दीटा गैमेट रो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन हबो. तापरे कोन हबो दीटा गैमेट रो न्यूक्लियस फ्यूजन हबो जाको तमे कारियोगेमी बोली कहउछो. सी जो स्ट्रक्चर डला जाइगोट बा जाइगोस्पोर that undergoes meiosis. सी टू चारिटा haploid spore production. ठीक अछि हम लिखि बस दूसरा नोट करियो. Sexual reproduction here fusion of protoplasm of male and female gamete. This event is called as what? Plasmogamy. This event is called as what? Plasmogamy. Protoplasmic marriage. Fusion of the protoplasm. Plasmogamous means marriage. Protoplasmic marriage. Protoplasmic marriage. प्रोटोप्लाज्म में जनकर मैरिज हो गया उनका शादी हो गया बेटा. फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. उसके बाद न्यूक्लियाई विल फ्यूज. न्यूक्लियर मैरिज. देन ऑफस्प्रिंग आएगा कि नहीं. मेयोसिस. फॉर ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, फॉर स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. Now my question is, the first step रे कौन हला दुईटे जाको gamete male and female gametes they will fuse. The protoplasmic fusion is called as plasmogamy. But it is जो दुईटा जाको gamete fusion हेबे से दुईटा gamete रा में morphology देखिबा और physiology देखिबा. With respect to their morphology and physiology, it is classified. With respect to morphology and physiology of fusing gamete of fusing gamete
It is classified into three types: isogamy, anisogamy, as well as orogamy. तो देखिए हमें ये सब कौन आइसोगेमी अनाइसोगेमी orogamy गोटे गोटे देखिए हमें डिटेल्स रे. First come to isogamous condition. First of all, isogamous condition. First condition, it is your isogamy. अच्छा तागर गोटे कथा मैं तुमको कहि दउछि मॉर्फोलॉजी माने कोन एक्सटर्नल अपीयरेंस बाहर को सेटा केमतिका देखा जाउचंते दैट इज मॉर्फोलॉजी आउटर अपीयरेंस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फिजियोलॉजी मींस देयर बिहेवियर देयर फंक्शन फिजियोलॉजी ऑफ द गैमेट्स मींस फंक्शनिंग ता माने कोन गैमेट्स आर मोटाइल और गैमेट्स आर नॉन मोटाइल बुझि पालो मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल शेप फिजियोलॉजी इज द फंक्शन दार स्ट्रक्चर और फंक्शन को भित्ति करी करी बेस करी करी हमें क्लासिफिकेशन करूचंती फर्स्ट वन आइसोगेमस सो आइसो मींस इक्वल आइसो मींस इन द ग्रीक लैंग्वेज इक्वल कांसेप्ट बुझे पाले नहीं इक्वल गैमस मींस मैरिज और गैमस मींस फ्यूजन सो आइसोगेमी मींस the two fusing gametes are equal morphology morphologically both are similar two fusing gametes माने male and female are having same morphology equal morphology इक्वल अपीयरेंस मॉर्फोलॉजी माने कोन रे एक्सटर्नल अपीयरेंस दी जनकर समान रहिबो मेल और फीमेल गैमेट दुई जनकर एक्सटर्नल अपीयरेंस कोन समान रहिबो फॉर एग्जांपल एठी गोटे मेल गैमेट मु नेली एटा फीमेल गैमेट बोथ आर इक्वल बा ये गोटे बोथ आर इक्वल बुझिपारे कि नहीं दी जन समान देखा कि नहीं बोथ गैमेट्स मेल फीमेल गैमेट्स आर इक्वल शेप हियर बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इक्वल मॉर्फोलॉजी दिस कंडीशन इज कॉल्ड as isogamous condition. Come to one isogamous condition.